Namaskar, Adab, Sat Shri Akal. A very warm welcome, everyone. Good morning, afternoon, evening, wherever you are. Hope you're doing well. You're staying safe and staying healthy. And I am glad to be back. Hello. Pehle to sabko welcome after quite a few days. Kamini ji, hello, Nazneen ji. Hello, hi, Gloria. Hello, Poonam ji. Hello, Katie. Hello, Ashish bhai. Hello. जय शिव शंभू सतीश जी अरे उड़ती उड़ती खबर आई परांठे हाजिर हैं हेलो रूबल हेलो आरएस वेलकम थैंक यू हेलो पैडी गुड टू सी यू हेलो रिजॉय after a long time and hope you are doing well. Yes, I'm doing excellent, Rubal. Hello, Yugyash Palji. Good to see some new names as well, and good to see some old familiar names. And welcome to this entire family. नमस्कार आकाश वीर जी, बहुत दिनों बाद आज वैसे भी अच्छा लग रहा है और कुछ दिनों बाद ये लाइव बटन दबा के वैसे भी थोड़ा इट वाज रियली गुड टू बी बैक. अच्छा था, it was a good break, you can call it. And that's what happens when you have uh, little kids, so you end up getting the necessary breaks. So thanks to them, I was able to take a little break and I was away. हालांकि पूरा अवे तो नहीं था. I was constantly being pulled into few things, और कुछ अच्छी कुछ बुरी, तो वो तो part and parcel of life है. But I just wanted to do this live just to tell everyone, yes, I am back. And we'll have more sensible, meaningful sessions. Hello, R, and hello to everyone who's here. So aaj ka session, kids are good, everybody is good, and yes, it's really important to be back in the real life as well as real life, and this is pretty much becoming my real life as well. जो मैं सुशांत सिंह राजपूत मूवमेंट में एक छोटा सा रोल प्ले कर पा रहा हूँ, इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एज my personal life. So I'm really glad to be here. So आज का session, obviously I'm going to keep it short, sweet, simple, and that's what we are aiming for going forward. कुछ चीज़ें obviously, I really wanted to. I was part of a space, कल एक space हो रही थी जहाँ पर ये movement के बारे में बात हो रही थी, and bits and pieces में मैंने वो भी सुना. इसलिए I really wanted to kind of do this session, and you know what, हो सकता है कि उस टीम से कुछ लोग ज़रूर सेशन देखेंगे. तो आई एम गोना पोस्ट दिस लिंक फॉर ऑल ऑफ यू. आप में से कोई भी आके अगर बात करना चाहता है, यू कैन. आई रियली वांटेड टू फोकस ऑन द 1st May डिजिटल प्रोटेस्ट, जो कि एक थोड़ा सा डिफरेंट बट वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटेस्ट है. सो आई हैव पिन द स्ट्रीम यार्ड लिंक आप सबके लिए, जिसने भी आना हो बात कर सकता है. कुछ चीज़ें जैसे कि आपने टाइटल में भी देखा कि सुशांत सिंह राजपूत मूवमेंट, ये जो जस्टिस की एक फाइट चल रही है, इस फाइट में अब वी हैव सीन अ लिटिल बिट ऑफ चेंज. लास्ट एक महीने से हमने एक जो अच्छा चेंज देखा, जो एक पॉजिटिव चेंज देखा, was Priyanka Dee's active role in this movement. We always wanted, हमने ये हर बार बात की थी, हम पिछले ऑलमोस्ट 1.5-2 साल से ये इस बारे में बात कर रहे थे कि we would love the family to come out, we would love the family to take more charge, and that's what has eventually happened. So I'm sure जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर लोग खुश हैं इस चीज़ से. I see Rejoy joined, so I'm not going to make anyone wait tonight. Hello, Rejoy. How are you? And morning Good morning. Delhi. Can you hear me? Can you hear Yes. me? Yes. So thank you once again after a long time. Yeah, from my end, it's fine. I'm doing. Everyone is well. Everyone is coping up the heat of India, because as you know, these are the critical months: April, May, June. It's very heat, either in Exactly. most parts of India. Yep. Specifically I in know. Delhi, it is very hot. In Kolkata, where my family stays, it's hotter. But the only problem with the eastern part is that a lot of humidity is there.
Whereas in Delhi, the temperature is hot, but you don't sweat. So that's the difference. Yeah. But it So can literally kill anyone. The heat is really creating a yeah. havoc. It That's is. what I heard. In fact, yesterday there was a discussion. There was a meeting with the CMs of all of the states with the Prime Minister regarding how to cope up. In fact, in West Bengal, the CM has decided to curtail the school days. So summer vacation will start from 2nd May. It's Great. 40 Okay. 42-degree average going on in Wow. Kolkata. I know it is So it's horrible. and small kids who have started again attending classes, they are falling sick. So that's a Yeah. concern. So coming to the muhim which you started and which we all are following in different forms or the other, we are approaching the second year, almost one and a half, or not even 1.5 months to go. Yep. So it's sad. It's sad that sad in the sense that we are yet to get any light. There were bits and pieces, fractions of hopes coming up sometimes from the some arrest being made in form of the home minister, etc., etc. But coming to the actual case, nothing has happened yet. To be very honest, Correct. yeah, lots and lots of people who are engaged in this muhim, somehow they do some sort of agitation, or in Delhi or in some other parts of Kolkata, or in other parts of India, that is on. But honestly speaking, nothing has happened. It hasn't demoralized me, to be very honest. But I was thinking that why are there any hope at the end of the tunnel? If there is a hope, then what type of hopes we are looking for? Because standing outside CBI Bhavan and showing placards justice for SSR is good to some extent, but whether it is literally moving them, or the CBI doesn't work with emotions. The CBI doesn't work on the crowd pulling person like Sushant, that इसके लिए we have to be extra cautious and come out with the case. They work on certain principles which are sometimes very peculiar, sometimes motivated from the political angle. So that is something, Varun, we have to, as a unit, we have to look how to intensify, because at least some sort of information should come. Second year death anniversary, even if we don't know, if nothing is coming out, then we have to change our course of action, either make it more vigorous, more I would say intensifying. I don't More know, means aggression. it's not coming in my mind at this moment. You will be Yeah. a Yeah. better person to judge. No, So something Rajoy, has I to be think done. correct, correct. No, the key word is something needs to be done to get some kind of either a response or some kind of update or some kind of movement in this, fight. I'll tell you, I'll be very honest, Rajoy. You've been here for as long as I've been here. हमने मिलके बहुत कुछ देखा, ups and downs. We've seen some of the things that NCB did. Some just one or two minor updates from the CBI. It's still going on, and some responses to those petitions that were filed by maybe common people. Nothing more than that. And I'm sure, to add to that, even the family, they are eagerly waiting. They are also, unke liye bhi it is very difficult for them to keep sitting patiently in, wait for some kind of a response. It is not easy. Consider, sisters, they all have their own personal lives as well. And that father who is sitting in the front yard constantly waiting for some kind of response. So it's not easy for sure. But Varun, हमारी तरफ से, I think. just to Sorry. interrupt you, Varun. Yeah. Yeah. Sorry for that. Yeah. What from Sushant's family, the positive thing which I found was, if you see, correct me if I'm wrong,
the initial period, the first 6 months or first 1 year, they were in a shock state. Yep. So there was seldom any comment, and we used to get very impatient that उन लोग क्यों नहीं बोल रहा है, उन लोग आगे Yep. क्यों नहीं आ रहा है. And in some, even I also, let me, I'm not a, I'm not saying that I'm perfect. Even I also said that why that day she went out in spite of knowing Sushant is life is in danger. Okay, but later I have seen the last 6 or 7 months the way the family has come forward. In fact, they have been going through a lot of turmoils, maybe pressure, maybe threats. You never know. But now that they are coming in some of the muhims, they are participating, which shows that they have overcome that. Now, if you are constantly threatened for the initial 6 months, you keep quiet. But then when you decide that no, I have to come out, so you slowly come out of your fold. So which I'm seeing, which is a very positive sign. It's not easy for a family who has lost their brother and knowing that what has happened to his brother, and then coming out slowly and in the limelight. This is a positive sign. Sorry, Correct. continue. No, no, absolutely. You're spot on, and that's what even I was kind of inferring to. Okay, the family has come out. They have, and especially the way Priyanka Di has been giving these taglines. Again, there have been issues, there have been fights. Keeping those aside, these Yeah, taglines which are coming up now are coming from Priyanka Di herself, and she is directly or indirectly giving us all the warriors a lot of ammunition as well. She is true, telling us, she's telling us something or some things which we were always contemplating, or we were like speculating and we were not even sure. But now correct. giving such kind of taglines, she's making few things very clear. So it's up to us how we see those taglines. If it's a matter of, there is a section of warriors who are just focused on helping highlight those taglines, promoting them, making them kind of trend on social media. True. But if you look at the other side, or the other section of those warriors, that includes you, me, and few more, uh, we should understand, what is she trying to imply, what is she trying to make us understand, who are those key people. She's taken a indirect or a direct dig at Shruti Modi. Now today she's asking indirectly or pointing that who changed the staff for SSR, the old staff of SSR. So all these speculations that we were making, I think they're coming true, that yes, even the family is also. Now you brought up a very good point, Joy, which was, why did the sister or leave? Now, again, not to kind of question or not to kind of counter her, but try to understand, when you have a 34-year-old, I don't think you have a 34-year-old boy, but even if you have a 34-year-old brother at home, try and understand, from your perspective or even my perspective, right? Today, on in this day and age, making a 8 or a 10-year-old understand certain things is not easy. So if it's a 34-year-old man who is a star, I'm just speculating. Again, this is just a speculation. I don't know the details, but there is definitely that kind of thing that, what, Didi, I will understand. I will handle the situation, and maybe he could have, Sushant could have sent the sister back himself, and it's Or in difficult. other way, Sushant did not want that जो भी होगा मेरे साथ ही होगा. I will not Sister, allow any ab- other of my family members to to suffer. So absolutely. he tactfully hook, convincingly hook, he told Preeti, Didi, you move on. You are coming Yeah, tomorrow. So आप घर में देख के आ जाना. Then we'll decide to either push off or have a meeting. Press conference exactly. होगा कि नहीं होगा. So that was the plan. There was a press conference 100% sure. But Exactly. that was Exactly. scheduled when Didi was supposed to come back. Yep. The press conference, if you Absolutely. recall, Varun, correct me if I'm wrong, it was scheduled for a Sunday. Correct. That's what, it could have happened earlier as well. And again, we will get more. I'm now more in, thanks to you. You've actually given me a kind of a, what do you call, क्या बोलूं मैं इसको, I don't want to say certain words, Point, but a point. let's put it, yeah, you've given me a point today.
I am gonna start tweeting directly or indirectly, and I'm gonna indirectly ask questions from Priyanka Di as well, on Twitter or otherwise. That maybe she could also tell us a little bit about whether all these assumptions, speculations, or these things that came out around some press conference, if we could have some kind of taglines around that, so that we could also understand कैसा कुछ हो रहा था, कुछ था. Did Sushant say कि ये लोग मुझे whatever मार देंगे या कुछ कर देंगे, and all that stuff? If we could get some kind of sense around that as well, because if that is also validated by her, I swear to God, these people who are the criminals, the killers, I think people will definitely start ripping them apart. Not that they are not ripping them apart now, but And one it will information be I'm more. like to share with you, Varunji, Yeah, yeah. that is through, though you may be having a lot of friends in Mumbai, I have some of them who are also with SSR warriors now, and they party also at night. They are not like ऐसा मतलब party तो चलता रहता है मुंबई में. Okay, so in one of the parties, I'm talking about first week of March, in Bandra, in one of the, and their party starts after 12 o'clock, after office time. Okay, Right. so it's very indifferent for me. I can stay till 10:30, 11 o'clock, but 12 ke baad, no. I have to sleep for 4 hours, and because I get up very early in the morning, 5 o'clock. Okay. So Bombay has a different work culture, different style of living. I have nothing against it. Their party was around 12:30 it started. Mhm. So one of the friends, he immediately called me up. I said, रात में phone किया, मतलब I saw this, कुछ, he's in problem. Emergency. Then he Yeah. said that, boss, I'm sending you a video. एक बंदा टोपी पहन के आया है, लेकिन अब मतलब मुंह अपना शर्म से छुपा रहा है, मतलब he showing his entire face. तो हम बोले कौन है? इम्तियाज, बिकॉज द फर्स्ट क्वेश्चन इम्तियाज खत्री होगा. हाँ, या तो बोले नहीं, ये है माने आदित्य पंचोली, सूरज पंचोली. Okay. This guy, even after 2 years, अगर ठीक है, he's no way related to the assassination, so जो भी हो, हाँ, मान लेते हैं फोन. तो अरे भाई, if you are that, तुम तो मुंह, why will you hide your face in a party? Yep. मतलब देखो, what I want to conclude is, deep down the heart, he knows what he has done. Okay, he knows he's under observation. बोलिए, he's being closely monitored, watched. So पार्टी में आया, ठीक है, घर में तो he doesn't have any work, to be very honest with you. हाँ, कोई फिल्म नहीं है, कुछ एड नहीं है, कुछ भी नहीं है. बाप का पैसा है, and he is working on that. तो अभी थोड़ा अपने आप को रिलैक्स, जिस तरह का नेचर है उसका, सो पार्टी में जाना उसका इट्स फिदरत में है. ओके, सो वहां पे भी जाकर ही इज नॉट ओपनिंग अप, माने ही इज वेरी कीपिंग हिमसेल्फ क्लोज टू वन कॉर्नर, सिटिंग, ड्रिंकिंग वाइन. तो मेरे को वीडियो भेजा. तो हम बोले, तुम क्या करोगे? तुम जाकर उसको बोलो, क्या डर रहे हो तुम्हारा तो फोर फादर है सलमान खान, तुमको तो बचा ही देगा. हाँ, why are you enjoy the party? तो हंसने लगा, बोले नहीं, I'm observing this person is, in spite of having such a high reach, is still under a sort of, क्या कहते हैं, मतलब shame बोलिए, डर बोलिए, जो भी बोलिए. So I thought of sharing this with you. Exactly. No, thank you for sharing. Actually, you're right. Unfortunately, and I don't have any shame in this, saying this, but I started following him. Just wanted to see, what is he up to on social media, and I've been observing. He is on social media publicly. Example you shared. He has become even more kind of reserved. He loves to do whatever his stuff अपने level पे, चाहे वो जिमिंग हो, चाहे वो रेसिंग करता है, या जो भी कार रेसिंग करता है, और बॉडी बिल्डिंग के अंदर जो करता है, अपने बाइक कार्स, ये वो सब का, he is just all by himself या वन और टू पीपल. एंड यस, he has वो Danny's son is also one of his friends, and then of course Tiger Shroff is his friend.
तो उनके साथ lunch, dinner and all that अपनी, but he is not the same person who he used to be, जो हमें जिया खान की मॉम ने बताया था कभी. He is definitely not. So he is very much scared. He is very much under, and maybe he would have been given some directions also कि बेटा तू थोड़ा हीरो Yeah, मत बन yeah, अभी, you're correct. कि नहीं You तो are correct. पकड़ा जाएगा और किसी दिन दारू के नशे में ही कुछ बक दिया कहीं और खुद ही अपने आप को फंसा Huh. दिया, तो so it'll be, so I'm sure. So And yes, one you're more right, and thing, thanks for sharing that as and well. one more That's information, which good. is a general information which I'm sharing. Uh, the group of this Suraj Pancholi, there are five main pillars of that group. My five friends. It Mhm. was Imtiaz, this Suraj, then Sandeep Singh used to come and drop, but not a regular one. Okay. Yeah. The fourth one, unfortunately, is the daughter of Sunil Shetty. That is Athia. Ananya. क्या नाम है भूल गया मैं, Athia. जो भी हो, Athia. जो भी हो, हाँ. Athia Shetty. And another one you'll be very surprised, is Sachin's daughter. Okay, so this is one group. They are very close. Okay, now हमारे talented batsman है ये so के Rahul Right. right? Yeah. Yeah. Now Rahul, okay, with his personal life I don't want to interfere, or it is his life, but they are very good friends. तो Yep. मेरा डर है क्योंकि these people catch hold of people who are famous, who have huge money, and then their career goes for a toss. We have seen it n number of times. So Bhagwan kare, I pray to God that this budding cricketer also doesn't fall into this nasty group. Thus, sorry if I have crossed my limit. I'm extremely sorry. Unfortunately, Rijoy. Yeah, no. Unfortunately, Rijoy, most of these people, right? चाहे वो KL Rahul हो, चाहे वो the Pandya brothers ho, all of these people are kind of part of, a lot of shit in the background. Sorry to say that, but Yeah, they unfortunately are. they are. 5-5 करोड़ की और कितने की घड़ियां पकड़ी गई थी जब कौन था वो पांड्या की. So all these things are happening behind the scenes. They will. तभी तो cricketers का, the amount of dearth these guys are into is coming out slowly and steadily, and it will. 5-5 6 6 करोड़ के और इनको Varun, IPL के before packages. before before you allow others to speak, just one last thing. Since we are slowly approaching this that unforgetful day, Yeah. so please, we have another almost 1.5 months. If you can plan it, how to go about it, or what are the basic things we need to do, so that will be nice. So I that will, we I are will, well I will ahead just of on the. a high level. I will on a high level tell you something, Rajoy, and to everyone who's watching now, who will be watching later. It is something which is being done by the family. Priyanka Di will be planning. She will be telling all of us what is the plan for 14th. How, where we already know it is going to be at Jantar Mantar on 14th. This has been shared with quite a few people by Priyanka Di. And what My one else will request to happen? you, Yes. my one request to you, since I'm in Delhi, right, Yep. and I don't have an Instagram, so I'll share my number some way or the other with you. So you Sure. put me in that group so that I get to know it. Since I'm in Delhi, I should come, Sure. but I should Absolutely. also. Okay, So there is thank there you. is no group with Priyanka Di, but unfortunately, or fortunately, we have one group that we've created. It's called the Global Group. I will give you so you can ping me. My number is very public. It's there on the screen right now as well. You can WhatsApp me or message me, somehow, and then I will add you to that group. I'll send you the link of that group, and there we share almost, that is the whole purpose of that group. जहां पर we share, what is happening. We will be sharing. Right now, we'll be sharing about this digital protest for 1st May, and uske baad we'll continue. But 14th June, it's in Delhi. It's at Jantar Mantar. All the other details, who will be there, what will be done, what planning needs to happen, it will be conveyed to all of us, including me, by Priyanka Di whenever she is done with the planning. But she will be the one who will be leading the 14th June for all of us.
Rejoy, your voice is cutting. Rejoy, we cannot hear you. Can you guys hear me? Oh, okay. Looks like we dropped. Uh, hey, Shweta, welcome. Hello. Hi, Are you guys able Varun. to hear me? Yes, yes, we are able to Okay, hear perfect. you. Hi. Hello, Shweta. How are you? Long, long time. Hello. Yes, it's been long time, Varun. Just good. Okay, not bad. I know Abhi, we'll talk offline as well, but how are things? What's happening? And ये digital protest जो first को है, उसके लिए भी अगर if Mm, you want to say something, please. yeah, so basically now and first and so on, only single message that the buzz should be on until we reach the 14th of June, and the impact should be high. Whatever you all are doing, we are doing, it should be really high so that the agencies are aware that we haven't stopped yet. Not only these campaigns, but on a daily basis, let's tweet in a way, tagging the agencies, asking the right questions, prompting them to at least come up with some news with regards to the case. So let's keep doing it. And again, let's stay united. Let's be vocal for the right cause. Let's stand for the Satya, which is justice for Sushant Singh Rajput. That's my only plea at the moment. Yes, Varun. बिल्कुल. You know what, Shweta? Even though people will hate me for saying this, but a fact remains a fact and will always remain a fact. जितनी मर्जी हम लोग रिक्वेस्ट कर लें, जितना मर्जी बार मैं कह लूं, आप कह लो, कोई भी कह ले, ये जो यूनिटी वाला जो वर्ड है, आई थिंक it is seriously not applicable anymore, क्योंकि जहां जो होना था, जितना होना था, आई थिंक वो हो चुका है. जिन लोगों ने जिसके साथ कनेक्ट होना था, कनेक्टेड हैं, और दे आर टेकिंग इट, आई थिंक दैट्स प्रीटी मच डन डील. Now expecting people to, with different ideologies to unite or cause के लिए, I think मेरा I am of the belief कि अब इस time पे each one of us is an individual warrior. Yes, we can be together. Few of us are definitely going to be together till the very end and after a conclosure as well. But expecting it from everyone, not gonna happen. सिंपल सी बात है. उसके ऊपर हम लोग स्ट्रेस आउट करें या लोगों को पुश करें, प्रेशराइज करें, वो भी आई थिंक इज समथिंग व्हिच आई विल डेफिनेटली स्टॉप. अगर लोगों को इंडिविजुअली करना है, इंडिविजुअली प्रोटेस्ट करें. अगर लोगों को इकट्ठे होके करना है, दैट्स आल्सो फाइन. We cannot question, we cannot force, we cannot push anyone to be together. End of the day, अगर लोगों को खुद ही सेल्फ रियलाइजेशन जिसे कहते हैं कि अगर वो नहीं है, then either a Shweta or a Varun or a Ayush or anybody cannot make them have understand that. अगर कोई सोच के आया है कि वो सुशांत के लिए है, तो वो अपने हिसाब से अपने differences को साइड करेगा. But yes, there are few people, few things which cannot be ignored, which cannot be compromised. वहां पर I only have one thing to say: do not stoop to a level कि एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज करो या टेक पॉट शॉट्स. इफ यू डोंट लाइक समवन, अरे बहुत सारे लोग हैं who you can connect with if you really want to be connected with people. Let's not push each other कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, वो सब चीजें that definitely doesn't work. So uh, इसलिए मैं इस यूनिटी वाले टॉपिक पे अब जाता ही नहीं. जितने लोग सुशांत के लिए आवाज उठाना चाहते हैं, let them raise the voice. Till the time they're not doing anything wrong, let them be in their space. अपना काम, आप अपना फोकस रखो, बाकी लोग अपना रखें, and that's pretty much my take on that. But other than that, ये 14th जो every 14th को तो हम करेंगे, but 14th जो जून के लिए प्लानिंग है,
I think uske liye we definitely need to get all the right people, the right minds together. Obviously, I'm sure Priyankadi will do all the planning, and we will also be informed ahead of time. But let's make sure we do whatever is possible. जितने लोग जा सकते हैं जंतर मंतर वो जाएं, जो नहीं जा सकते डोंट फील कि सब कुछ जंतर मंतर पे ही होना है तो वहीं जाएंगे और वहीं होगा. आप नहीं भी आ सकते, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, आप जहां हैं वहां से भी करें, बट करें जरूर. सो थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट. और फर्स्ट के लिए भी ऑब्वियसली जो एक डिजिटल प्रोटेस्ट हो रहा है उसके लिए भी मैं इतना ही कहूंगा. इट्स अ वेरी सिंपल एक्चुअली. लेट मी ब्रिंग दैट अप. बट श्वेता, इन केस यू वांट टू से समथिंग, प्लीज फील फ्री. तब तक मैं वो फ्लायर फ्लैश करता हूँ. Right. Okay. All right. Nahi to Ayush, if you want to say something, please go ahead. नमस्ते सभी को. और जिस तरह से अभी देख रहा हूँ पिछले कुछ समय से कि प्रियंका दी टैगलाइंस दे रही हैं, अच्छी बात है कि लोग पर डे ट्वीट कर रहे हैं, सुबह में भी और शाम में भी. लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, देख रहा हूँ कि उनके दिए हुए टैगलाइन से कह सकता हूँ कि प्रॉब्लम हो गया है. एक टैगलाइन आता है जिसमें संदीप सिंह का नाम जिक्र होता है, बाइपोलर आता है, फिर इम्तियाज खत्री का आता है. कई लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है. अब मैं इस मोमेंट में देख रहा हूँ कुछ लोगों को उनको ही कि कोई बात अच्छा काम कर रहा है, कुछ कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें भी टांग अड़ाना है इन लोगों को. क्या इस दिन के लिए सुशांत ने ये सब, अगर ऊपर से सुशांत देखते होंगे तो यही सब सोचते होंगे कि मैं, मेरे को जस्टिस ऐसे मिलेगा? हाँ, आपस में लड़ भिड़ रहे हैं. मतलब दो हिस्सों में बट गया है, ट्रोलर्स एक तरफ, वॉरियर्स एक तरफ. एग्जैक्टली. आयुष, मुझे उससे याद भी आ गया. आई थिंक यू शेयर्ड इट, आपने शेयर किया था. एक दो ऐसे लोग हैं जो अपने आप को कुछ और ही समझने में लगे हुए हैं, कुछ और ही अपने आप को इस मूवमेंट के लोग समझते हैं वो. और उनका सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम इतना है कि कोई भी अच्छा काम करता हुआ या कोई भी सुशांत के लिए जो आवाज उठाता हुआ, चाहे वो किसी भी वे में हो, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सेशंस हों या स्पेसेस हों या सोशल मीडिया पे हो. वी जस्ट हैव टू इन्वेस्टिगेट द केस. इन्वेस्टिगेशन हो गया, जितना सोशल मीडिया पे केस इन्वेस्टिगेट होना था, आई थिंक इट्स प्रीटी मच डन. अब इस टाइम पे इट्स मोर अबाउट कीपिंग द राइट पीपल टुगेदर एंड फोकसिंग ऑन सर्टन थिंग्स. तो वो अगर हम कर रहे हैं तो वो ज्यादा, उन लोगों को शायद उसमें भी प्रॉब्लम है. तो ऐसे लोगों को सही में बिल्कुल सही कहा. मैं तो ये कहता हूँ कि इन्हीं को शायद बाइपोलर की प्रॉब्लम हो चुकी है, इनको पता ही नहीं है. एक दिन ये कुछ होते हैं, दूसरे दिन ये कुछ और होते हैं. सो दैट इज अनफॉर्चुनेट, दैट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमें ये सब कुछ देखना पड़ रहा है. बट एंड ऑफ द डे, few of us, I think we can keep our focus. अपना फोकस रखते हैं, इन लोगों को थोड़ी देर इग्नोर करते हैं, थोड़ी देर जब तक इग्नोर हो सकते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि इनको जवाब देना चाहिए हमें. तो उस चक्कर में हमें कई बार पढ़ना पड़ता है उस चीज के लिए. बट क्या करें, आई मीन दिस इज हाउ इट इज. इस मूवमेंट को बहुत गंदा मचा बना दिया इन लोगों ने. Okay. So I know, Shweta will completely understand. बहुत सारे लोग, इसीलिए मैं इस सेशन के ऊपर भी अगर थंबनेल देखो आप, तो मैं कुछ मैसेज ही देना चाहता था कुछ लोगों को, और मैं दूंगा भी अभी थोड़ी देर में. बट उससे पहले आई जस्ट have to flash this, and I see Abhay as well. Abhay, and give me 1 second. Let me just show you all कि किस डिजिटल प्रोटेस्ट के बारे में बात हुई थी. Somehow all of a sudden मेरा सिस्टम बहुत स्लो हो गया है. Okay, give me 1 second. All right. So I hope you all can see the screen.
I don't know कहाँ गया. आ गया. Okay. And Mamta ji, I will respond. Let me just remove your message for a second. I will respond to this as well. So guys, ये है वो global digital protest 1 मई को. इसकी बिल्कुल plain simple instructions हैं, nothing complex about it. Step 1 के अंदर जैसे लिखा है, record your video or audio saying I am Sushant from जहां से भी आप हैं. I want justice. या तो आप उसको प्रिंट करके अपने हाथ में प्ले कार्ड की तरह रख सकते हैं, या आप हाथ से भी लिख सकते हैं, या आप स्क्रीन पे भी उसको रख के उसकी फोटो ले सकते हैं साथ में. सिंपल. अगर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, if you're okay showing your face, make it as कहते हैं ना, powerful. Don't be aggressive, don't be assertive जरूर हो, but aggressive ना हो. But yes, give a strong message. और अपना नाम आप सुशांत बताएं उसके अंदर कि I am सुशांत from जहां से भी, and I want justice. और डिफरेंट तरह के प्ले कार्ड्स बनाए. जीना जी जो सारे फ्लायर्स और बैनर्स और पोस्टर्स, शी डज एवरीथिंग अमेजिंगली. शी एक्चुअली वॉलंटियर्ड कि अगर आपको अपनी लैंग्वेज में भी चाहिए, आप जहाँ की भी सिटी स्टेट कंट्री में आप रहते हैं, और इफ यू हैव अ डिफरेंट लैंग्वेज, आप उनको रीच आउट कर सकते हैं, एंड शी विल बी मोर देन हैप्पी टू प्रोवाइड यू अ प्ले कार्ड या अ बैनर इन योर ओन लैंग्वेज. और आपने जो ऑडियो या वीडियो जो भी बनाना है, वो भी आप अपने using this is not mine, Yash. This has been created by Bijina, and Bijina has already put her Twitter handle on this. So yes, great flyer. We should all make different flyers as well if we can. Just jisko aata hai. But more importantly, this is a very 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 simple instruction कि आपको वो वीडियो रिकॉर्ड करना है. Now people are sometimes not happy or open to videos, तो आप सिर्फ एक ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, and you can share it with me. I will try to add Sushant या तो flyer या something, and I'll make it like a audio video visual, and we could all post it on Twitter and all the social media, not only Twitter, सारे social media पे. And the idea is to create a tweet chain. So Twitter पे एक chain बनाएंगे जहां पर PMOs and HMOs and all of these have to be tagged, and we'll make a long chain. We'll show them how much the entire world is waiting and eagerly waiting for a closure for Sushant and his family. So let's do it on 1st May. 1st May को around 7:30 8 AM के बीच में is the idea. So आप लोग प्लीज, आपको जब मौका मिलता है आप ये फ्लायर बनाएं, प्रिंट आउट ले, बैनर प्रिंट करें, जो भी करना है. Get your audio video visual ready between now and 1st, but 1st को around that time just start bombarding it on social media. Let's make sure we make the loudest noise around this digital protest. आयुष, sorry, अबे भाई, आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज. अब you were also part of the space yesterday जो कल हुई थी, तो बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे. नमस्ते, खम्मा गणी, जय श्री राम सबको. आप सब इसमें पार्ट लीजिए. मैं यही बोलूंगा कि जितने ज्यादा लोग इसमें भाग लेंगे उतना अच्छा होगा. और ये टाइम लिमिटेशन भी हमने इसमें रखा हुआ है, क्योंकि जितने कम समय में जितने ज्यादा लोग उनके ट्वीट के नीचे अपना पार्टिसिपेशन दिखाएंगे ना, वो चीज उनके नोटिस में उतनी ज्यादा जाएगी. वरना क्या है कि हम सब जानते हैं कि लोग वहां पर आ जाते हैं अपने 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 कमेंट डालने. कोई तारीफ करता है तो कोई ट्रोल करता है, कोई क्या करता है. उससे क्या होगा कि भाई अगर हम अलग अलग डालेंगे तो उससे क्या होगा कि भाई वो हमारे कमेंट छट जाएंगे. फिर किसको दिखेंगे किसको नहीं दिखेंगे, कहीं क्या होगा, कहीं किसको कौन सा कमेंट दिखेगा. उससे क्या होगा कि भाई हमारी बात का जो इम्प्रेशन पड़ना चाहिए, इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, वो नहीं पड़ेगा. तो एक साथ अगर हम सब डालेंगे ना, कल भी बोला था कि भाई एक रात के पहले आप उनके जो ट्वीट का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि 1 मई को जैसे ही वो कोई ट्वीट करे आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप ना अपना ऑडियो वीडियो जो भी है वो उसको तैयार रखें.
और ये आइडिया मैंने कल दिया था स्पेस में कि 30 तारीख को एक मीटिंग होने वाली है प्रधानमंत्री जी की, सब जजेस और इनके साथ चीफ मिनिस्टर के साथ, जस्टिस को लेकर के। तो आप उसको भी जरूर सुने, ताकि आप उसमें से पॉइंट निकाल करके और अपने वीडियो ऑडियो में हाईलाइट करें, ताकि लोग ये समझे कि भाई इतना बढ़िया एनालिसिस इन्होंने किया है। अगर कोई जो इस मुहिम से जुड़ा हुआ नहीं होगा, अगर वो ये चीज सुनेगा तो उसके दिमाग में भी एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा कि भाई ये लोगों ने बहुत अच्छा एनालिसिस किया है 30 तारीख की मीटिंग का। तो उनमें से भी पॉइंट आपको आप हाईलाइट करें। ये जरूरी नहीं है कि भाई आपको करना ही है, आप अपने मन के अनुसार करें हर चीज। और एक और चीज कि आयुष भाई बोल रहे थे वो टैगलाइन और उनको लेकर के, उसमें बाइपोलर वाली टैगलाइन को उन्होंने बोला कि लोगों को तकलीफ हो रही थी। तो मुझे लगता है ये आयुष भाई को गलतफहमी हुई है यहाँ पर। वो किसकी बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे, मुझे सब मालूम है किसने क्या लिखा था। पर क्या है ना कि वो जिसने भी लिखा था उससे बात हुई थी और उनको समझा दिया था कि भाई क्या क्या है। तो वैसे उनको किसी टैगलाइन से कोई तकलीफ नहीं होती है। Right. और Okay. वो इसको लेकर के थ्रेड भी मैंने पोस्ट कर दिया है, तो आप देख सकते हैं। Right. Okay. मुझे अभी एक मैसेज आया था कि there is some kind of spelling mistake. सुशांत spelling is incorrect. ओके 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 ओके, मुझे समझ आ गया कहाँ है। मेरे दिमाग से भी ये निकल गए थे, अभी कल मैंने ही करेक्ट किया था और अभी मेरे दिमाग से निकल गया। वो जो फर्स्ट जो स्टेप है ना, उसमें सुशांत की स्पेलिंग गलत है। फर्स्ट स्टेप वाले में उसमें सुशांत की स्पेलिंग गलत है। कल ही मैंने करेक्ट किया था और मेरे ही दिमाग से निकल गया। ये देखिए। Oh, शांत। आई डोंट नो, या तो मैं कुछ ज्यादा देख रहा हूँ तो मुझे नहीं दिख रहा कहाँ गलत है, मुझे समझ नहीं आया। आई एम सुशांत स्टेप 1 इसमें में। नहीं, इसमें नहीं, वो हाँ, ट्वीट वाले थ्रेड्स में शायद इसमें भी होगी, तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन वो जो ट्वीट वाले थ्रेड्स है ना, उसमें स्पेलिंग गलत है। ओके। मे बी मुझे मैं थोड़ा डिल्यूजनल हुआ पड़ा हूँ, मुझे दिख नहीं रहा कि इसमें कहाँ पर गलत है स्पेलिंग। SUSHANT, यहाँ पर एक बार सुशांत है, दूसरी बार स्टेप 1 में सुशांत है, वहां भी मुझे ठीक लग रहा है। थर्ड मुझे दिख नहीं रहा और कहीं सुशांत का नाम। सो आई विल अरे चेक। इसमें नहीं वरुण भाई, इसमें नहीं। वो जो थ्रेड पोस्ट किया है ना मैंने, इंस्टाग्राम सॉरी ट्विटर पर थ्रेड ओह, पोस्ट नाउ आई किया है गेट ना। इट। ओह, सॉरी। ओके, मैंने आज बड़ी महीनों और सालों के बाद मैंने पिछला वाला जो जो बैनर था उसको मैंने व्हाट्सएप पे शायद स्टोरी की तरह लगाया था, या जो भी उसको बोलते हैं, वहां पर मैंने देखा गलत है। तो ओके, दैट्स व्हाई आई गॉट कंफ्यूज। अभी मैंने आपको भी टैग किया है थ्रेड में, आप देख हाँ, लीजिए नाउ आई वहां पर। स्टेप 1 में SHU लिखा हुआ है। हाँ, दिख गया, मुझे दिख गया, अब मुझे समझ आ गया, वहां पर आई एम सुशांत गलत लिखा हुआ है। आई सॉ दैट। Perfect. So thank you. And hopefully this new flyer will be the one which will be used. तो पिछले वाले में गलत था. So glad that you brought up. Yep. So anyways, I mean, going back to the topic, यहाँ पर मैं इस प्रोटेस्ट के बारे में तो ऑब्वियसली विल कंटिन्यू टू टॉक मोर, बट प्लीज आप जहां पर भी हो प्लीज ज्वाइन एंड रिकॉर्ड योर वीडियो। छोटा वीडियो होगा, ज्यादा बेटर होगा। आई थिंक कुछ लोगों के लिए ट्विटर के ऊपर वीडियो अपलोड करने की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जो मुझे कल पता लगी। समहाउ
मैंने देखा था आई कैन अपलोड इट फॉर 5, 7, 8 मिनट्स का वीडियो भी समहाउ, बट देर आर पीपल हु आर सेइंग के उसके ऊपर शायद लिमिटेशन है फॉर 1 मिनट या कुछ ऐसे कुछ की। तो आप जितना छोटा मैसेज रखें 30 seconds to 45 seconds वुड बी आइडियल। और जैसे मैंने कहा दिस इज जैसे बिजीना फ्लायर्स और बैनर्स के लिए कह रही हैं, ऑल आई कैन डू फॉर एवरीबडी और एनीबडी इज कि अगर आप लोग सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड करके ऑडियो फाइल भेजना चाहते हैं आप वो भी भेज सकते हैं। उसको मैं एक ऑडियो विजुअल बना के उसके ऊपर मे बी सुशांत की फोटोग्राफ या समथिंग आई विल अपडेट इट एंड गिव इट बैक टू यू, और उसके बाद आप उसको पोस्ट कर सकते हैं सो दैट द ऑडियो इटसेल्फ इज जस्ट नॉट ब्लैक, तो उसके ऊपर एटलीस्ट एक विजुअल होगा एंड वी कुड कीप दिस फ्लायर एज द बैनर या कुछ भी करके तो ऑडियो विजुअल बनाएंगे। सो लेट्स मेक श्योर वी डू इट as much as possible and let's start recording it between now and tomorrow, क्योंकि 30th के बाद we have to post it on the first itself. Now going back, ममता जी ने एक point रखा था and I partly agree with you Mamta ji, and I know we all believe कि spiritually कहें या इसको एक कुछ भी इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर जस्टिस मिलना सुशांत के लिए इट इज नॉट गोना बी इजी। हम देख ही रहे हैं ऑलमोस्ट 2 साल एंड इट विल डेफिनेटली टेक सम मोर टाइम, बट एट दिस जिस तरह से चीजें हुई हैं, यू मेंशन कॉस्मिक जस्टिस, आई बिलीव इन दैट, और वही इसी की वजह से शायद ये जितने भी सो कॉल्ड बड़े नाम बड़े टाइटल्स रोल्स पे बैठे थे लोग, चाहे होम मिनिस्टर हो महाराष्ट्र के, चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो, चाहे कोई भी हो, ये सब लोग इस टाइम पे दे आर फीलिंग द हीट। some of them already behind in custody, few more will definitely follow, चाहे वो कोई मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई कुछ भी हो, this cosmic power जो सुशांत की एक एनर्जी है उसके बेसिस पे जस्टिस तो मिलके रहेगी। इज आई ऑल्सो इनिशियली बिलीव्ड जस्ट लाइक यू कि सिस्टम जस्टिस को पता नहीं देगा नहीं देगा, होगा नहीं होगा। आई वॉज ऑल्सो वेरी स्केप्टिकल, बट जैसे जैसे ये चीजें होती शुरू हुई आई स्टार्टेड बिलीविंग कि व्हाट, आई थिंक सुशांत अपने आप ही करवा लेगा। हमें सिर्फ साथ देना है, हमें सिर्फ साथ चलना है, हमें सिर्फ साथ हाथ बढ़ाना है इन चीजों के अंदर अपना एक दूसरे के साथ मिलकर, एंड आई एम श्योर सुशांत अपने आप ही जस्टिस ले लेगा। एंड द लीस्ट वी ऑल कैन डू इज स्टैंड स्ट्रांग विद द फैमिली, स्टैंड स्ट्रांग विद प्रियंका दी राइट नाउ, who needs all our support, who needs all our love, and we will continue to give her all the support, the family all the support that they deserve, and it will definitely get them a closure. So थोड़ा और पेशेंस, यही मैं कह सकता हूँ। एंड ऑफ द डे आई डोंट इवन नो, नीदर डू यू, नीदर डज द फैमिली, कि इसको कितना टाइम लगेगा। all we can do is just be a little bit more patient and continue, so please, let's not lose hope, and amongst each other, आपस में भी हमें एक दूसरे को मोटिवेट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये फाइट, ये हमें पहले ही पता था, ये छोटी फाइट नहीं है, ये जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। सो सुशांत है हमारे आसपास ही है, एंड he will definitely get us what he wants, he will get it, what the family deserves, they will get it. So please, let's be hopeful. All right, last के 10 मिनट, भाई आयुष, anything you guys want to say before I talk a little bit about this nonsense, trolling nonsense? अगर कुछ आप भी कुछ कहना चाहते हैं। ये अभी आपने थोड़ी देर पहले बात बोली थी कि भाई ये लोकल लैंग्वेज को लेकर के भाई उसमें भी बनानी चाहिए, तो उसको लेकर के पहले ही बोल दिया गया है जिना जी को कि भाई जिसको भी चाहिए जिस भी लैंग्वेज में वो उनको बता दें कि और वो इस चीज को लेकर के भी बनाएंगे बैनर्स और फ्लायर्स। करेक्ट, वही मैं बता रहा था कि कल स्पेस में कुछ चीजें, जितनी मैं स्पेस सुन पाया, मैंने सारा तो नहीं सुन पाया, बट जितना मैं सुन पाया उसमें ये कुछ चीजें थी जो मैं हाईलाइट करना चाहता था। सो यप, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट अप। सत श्री अकाल जैस्मिन जी, की हाल चाल? सुशांत सिंह राजपूत इज ऑलरेडी टेकिंग रिवेंज। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, आप ही लगा हुआ है
and he will definitely get his own justice all by himself. We won't even have to do a lot of hard work. All right. Before we end, लास्ट के कुछ मिनट सोशल मीडिया पे the so called these trollers, ये abusers, जिन्हें मैं offender भी बोलता हूँ, and these offenders could be like in any terminology, आप इनको कुछ भी कह सकते हैं. you know बहुत देर तो मैं भी बोलता रहा, मुझे भी काफी लोग सजेस्ट करते रहे, वरुण इग्नोर, वरुण इग्नोर, वरुण इग्नोर. यस, वी आर, सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो हम इग्नोर कर रहे हैं और वो करेंगे भी. इग्नोर करना सबसे पहला हमारा बर्थ राइट है कि ऐसे लोगों को, इनको इग्नोर ही करना चाहिए. when they cross their limits, उस टाइम पे हमारी वीकनेस नहीं दिखनी चाहिए. हमें ये नहीं दिखना, उनको दिखाना कि व्हाट, हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो बिल्कुल चुप करके आपको इग्नोर कर रहे हैं. बिकॉज ये लोग अलग लेवल पे पहुंच जाते हैं. समटाइम्स दे आर पुटिंग अप सम पिक्चर्स, कोई पिक्चर्स करेंगे, वीडियोस करेंगे. जैसे अमित वर्मा एक बार एक सेशन किया था, वहां पर बात हुई थी how they kind of get you involved into certain things and then they blackmail you. So kuch bhi ho sakta hai. So end of the day, you cannot just keep quiet and keep on letting them ignore, abuse you. तो कई बार ऐसे लोग हैं यहाँ पर इस सोशल मीडिया पे अपने डिफरेंट आईडी से, डिफरेंट फेक पिक्चर से, और कई बार तो बेशरम इतने हैं कि सुशांत की डीपी लगाएंगे, सुशांत का फोटोग्राफ लगा देंगे या फैमिली की लगाएंगे. बट when you look at their language, और कुछ तो मैंने ऐसे हैंडल्स देखे जिसके हैंडल के अंदर ही सुशांत का नाम है, या SSR करेंगे अपने आप को, या सुशांत बोलेंगे, या कुछ भी करेंगे. सो दीज लूजर्स हैव नथिंग एल्स इन देयर लाइफ. कई लोग तो ये भी कहते हैं कि इनकी तो ये जॉब है, दिस इज देयर फुल टाइम जॉब, जिसके लिए उनको पैसा मिलता है, तो वो करेंगे ही. तो आई एग्री, कई लोगों की तो शायद ये जॉब ही होगी कि पब्लिकली ट्रोलिंग करना है. एंड देन इन्हीं में से कुछ लोग लीडर्स बनना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो और कुछ को तो मैं ऐसा, आई हैड हाई रिगार्ड्स फॉर फ्यू पीपल. कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके साथ मैं सोचता था कि यार ये शायद सुशांत के लिए है, बट उनके असली चेहरे वापस आ गए, बाहर दिख रहे हैं, एंड पब्लिकली एटलीस्ट फ्यू ऑफ अस ऑलरेडी नो देयर रियलिटी. बट कुछ लोग हैं जो अभी भी दे आर समहाउ इग्नोरिंग कि इन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया. तो उनको लगता है कि हाँ चलो, एक ग्रुप के साथ नहीं, दूसरे ग्रुप के साथ विल क्रिएट अ गुड इमेज, वहां पर हम बैठेंगे, वहां पर हम कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी इनडायरेक्टली करेंगे. बट एंड ऑफ द डे ये लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस मूवमेंट को खराब करने आए हैं. जो लोग समझ सकते हैं, समझ चुके हैं, वो तो आगे मूव ऑन कर चुके हैं. जो नहीं समझ रहे, गॉड हेल्प देम, बिकॉज आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, श्वेता ने एक स्पेस में बोला था ये, एंड आई कंप्लीटली एग्री विद हर स्टेटमेंट, कि आज की डेट में अगर आप इनको अपनी स्पेसेस या अपने चैनल्स या अपनी जगहों पर, इफ यू गिव देम एन अपॉर्चुनिटी, they will turn their backs the moment उनका पर्पस सॉल्व हो जाता है, और वो आपके ऊपर बेसिकली कोई ना कोई एलिगेशन या कोई चीज ऐसे लगाएंगे कि दैट यू आर आल्सो द बैड गाय और द बैड पर्सन. तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स, ट्राई टू नो द history of someone. Just because somebody is trying to be good now doesn't mean that जो पिछली चीजें, अब जैसे मैं अपना ही अगर एग्जांपल देता हूँ, मुझे और किसी का एग्जांपल क्यों लेना. आई डिड समथिंग वेरी रॉन्ग इनिशियली, कंप्लीटली एग्री, बट द मोमेंट आई रियलाइज कि वो चीज गलत थी, उसके बाद आई नेवर एफिलिएटेड माई सेल्फ with certain people and I will never go back no matter what happens. चाहे वो कुछ भी कर ले, वापस नहीं जाऊंगा. but doesn't mean के there are few people who have been in the wrong side, again tried to be on the good side, again went back to the same people, again come back. ये बैक एंड फोर्थ जो कर रहे हैं, इन लोगों को you really need to filter out, because end of the day ये कब कहाँ क्या गलत करें कोई पता नहीं. They have gone to such levels कि किसी की पर्सनल हेल्थ, किसी के पर्सनल फैमिली एंड अदर चीजों के ऊपर अटैक करना.
पर्सनल डिटेल्स के बारे में बात करना, पब्लिकली शेम करना, चाहे वो बॉडी शेम हो, एज शेम हो, कोई भी किसी भी तरह से अब्यूज करना, has nothing to do with this movement. So if somebody is doing that, please try to understand that they are not here for Sushant. They're just using वो मास्क है जो सुशांत का नाम का वो यूज कर रहे हैं. Behind that mask is an evil person sitting for abusing others. So वो अपनी personal frustration निकाल रहे हैं, guys. Please try to understand and stop supporting, stop being with them. और कहीं दिखते भी हैं तो either you ask the person to kick that individual out, otherwise आप वहां से खुद ही निकल जाएं if you don't want to get into fight. So मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ऐसे abusers और ऐसे लोगों को it's high time we let them kind of side away from this movement, because we don't really need them in this movement. They can do whatever they want. अपने लेवल पे आप सुशांत के लिए फाइट करना चाहते हो, जाओ, आप कहीं भी खड़े होके फोटो खिंचाओ, किसी के साथ भी करो, बट लेट्स नॉट गिव देम दैट काइंड ऑफ सपोर्ट जो जो जिस वजह से उनको लगता है कि वही वो सब कुछ है. सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से. And at the same time, I can see some of the messages coming in for the movie Jersey. I am so glad कि एक बार फिर से Bollywood पूरा का पूरा सत्यानाश हो चुका है, and this movie has also tanked. अक्षय कुमार से लेके शाहिद कपूर से लेके anybody who has just abused और बीन बैड टू सुशांत, सबके साथ दिख रहा है. चाहे शाहरुख की मन्नत की नीलामी की भी कुछ मैं सुन रहा था, आई डोंट नो इफ दैट्स ट्रू और नॉट, बट अगर ऐसा कुछ है हो जाना चाहिए. नीलाम पूरा का पूरा, एंड ही शुड बी किक्ड आउट ऑफ द कंट्री. इसको ऐसे लोगों को वैसे भी हमारी कंट्री में रहने का कोई हक नहीं है जो एंटी इंडिया लोगों के साथ, आईएसआई एजेंट्स के साथ घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. सो that's obviously something good. And again, मैं तो फिर वही कहूंगा, this is all Sushant's spiritual powers making it happen. So those were the few things that I wanted to do, and I'm really glad that's not true about Manna. Thank you Gloria for confirming. I thought so, मुझे अभी confirm नहीं है, but मैं कुछ सुन रहा था, कुछ लोगों ने WhatsApp पे messages भेजे थे and they wanted me to check, but मुझे नहीं पता कि वो नीलामी का, लगता तो नहीं है, इतना पैसा बना चुका है वो individual. I don't think it is gonna be possible कि वो कुछ होगा. All right, last के 2-3 मिनट. एनीथिंग एल्स आयुष या भाई आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ, मैं भी अभी सही बोलने वाला था कि ये मन्नत वाली एक फेक न्यूज है, ये ज्यादा कुछ नहीं है, इसको सीरियस ना ले. बिल्कुल. थैंक यू. ऑलराइट, आयुष कुछ कहना चाहते हो? बस लास्ट में ये कहूंगा कि जितने लोग जो हैं, प्लीज ऐसे लोगों की बात ना सुने जो अफवाह उड़ाना या फिर ये कहना कि ये सिर्फ अपना प्लेटफॉर्म देते हैं कि ये सब करो वो सब करो. प्लीज अगर आप मोमेंट पे आए तो प्लीज मोमेंट पे ध्यान दीजिए, ऐसे लोगों पे ध्यान ना दीजिए. कहते हैं घर को आग लग गई घर के चिराग से, ये ट्रोलर्स को आग लग रही है एसएसआर वॉरियर्स के नाम के चिराग से. वही हाल हो गया. क्या बात है, क्या स्टेटमेंट है आयुष. सो अमेजिंग, वेरी मैं आयुष का ये भी कहूंगा, आयुष आजकल नहीं, बहुत देर से मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और बातों बातों में ऐसे मीनिंगफुल बातें बोल जाता है और सोचने पे मजबूर करता है. सो ग्रेट, एंड कीप ऑन रोरिंग. अगेन एक किसी ने भेजा था, कोई और भी आयुष है इस मूवमेंट में, वो हमेशा कहते हैं कि इफ यू वांट टू बी आयुष शेखर एंड डोंट बी द अदर आयुष. सो I am proud of you, Ayush. And let's keep roaring, let's keep motivating, let's keep supporting the right people. जाते जाते मैं फिर वही कहूंगा, Shweta has gone through a lot of hell. It's literally hell. Sonal has gone through hell, and she is still kind of being targeted unnecessarily, and there are many more such people who have been targeted. And ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस मूवमेंट को थ्रू टारगेटिंग दीज पीपल, चाहे वो श्वेता हो, चाहे सोनल हो, चाहे वो एक दो और लोगों को मैं नाम और क्या लूंगा, इन दो का मैं इसलिए ले सकता हूँ बिकॉज आई नो दे हैव गॉन थ्रू हेल. तो इन लोगों को टारगेट करके कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी मैंने बड़ी बार ये वर्ड यूज किया था पहले भी और मैं आज भी यूज करता हूँ कि these are not only trollers, these are literal sense में these are
abusers, वो इनको आप woman abuser कहें, इनको आप just general abusers कहें, because they are abusing everybody left, right, and center. They really don't care who is who. uh, and end of the day, these guys are just creating noise, unnecessary noise. So please, 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 ignore those people and come out and show support for people who have been here for a very long time, raising their voice, चाहे वो श्वेता हो, चाहे सोनल हो. Yes, Shweta does some videos. Shweta does a lot of social media. She has stood strong for Samir Wankhede to all the issues and against people like Nawab Malik. So has Sonal. Sonal has stood for Sushant, brought people together. Yes, she does antakshris or these different spaces, which is actually bringing people together, which is bringing a lot of peace and sanity to this movement. So proud of everybody who's doing that. And then we have Ayush, we have Abhay, we have so many other people, Paddy, and then Rubal. We have Rachna, who's doing it. Shalini also, when she comes in with so much positivity. Obviously, Girijaji, and the list is long, long list. So please, let's try to stand with the right things, right people, and keep supporting each other, because end of the day, these trollers, इनको तो और कुछ मिलेगा नहीं, तो लोगों की पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल बातों के बारे में बात करेंगे. एंड इवन चटाली, फॉर एग्जांपल, अभी मैं चटाली का भी नाम कैसे भूल गया. शी हैज बीन ट्रोल्ड इनफ and continues to be trolled. So all these people deserve a lot of respect, a lot of or सिर्फ इनका क्यों कहूँ, everybody expects a lot of respect. आप कुछ भी करते हो इस movement में, till the time you're doing the right thing for Sushant and this movement, you should be given the due respect, no matter who you are, how old you are, how influential you are. Every warrior matters, every voice matters. Let's continue to do that. Let's continue to support them. Let's continue to support this movement, and above all, let's continue to support Priyanka Di and the family as they continue this fight. So thank you so much, everyone. I hope the message goes out loud and clear to these trollers. Without naming those idiots, I really just want to tell them that we will ignore you till a time we can. Uske baad, we will definitely give you back in your own language, because we are capable enough to give you back in your own language. क्योंकि आपको शायद तमीज की लैंग्वेज, आपको एक वो ह्यूमिलिटी चीज समझ नहीं आती. तो अगर हमें उस लेवल तक तो हम शायद नहीं गिर सकते, बट एटलीस्ट we'll get down a little level, lower, to give you back in your own terms. So thank you so much. एक बार फिर मैं बताना चाहूंगा, guys, please, 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 be part of this digital movement which is happening on 1st May. 1st May ko, I'm gonna flash this one more time. This digital protest is gonna be a audio video. Let me share this. Okay. And let me just make it full screen. So this global digital protest happening on 1st May. I am Sushant. I want justice. This is going to be your video that you want to record. Get it ready for the 1st of May, and let's post it somewhere around 9:30 a.m. IST. Tag PMO, HMO, President, Kiren Rijeju, DOPT, Supreme Court, and make sure we make a lot of noise on 1st May. ये chain बनाएंगे, and we'll circulate this. We'll tweet, retweet each other's tweets, and let's make sure that we make the loudest of noise. So on that note, once again, thank you so much. Feels so good to be back. I am really happy that एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि all the people who have WhatsApped me, all the people who have DM'd me, you know who you are. So thank you so much for checking in on me. It was just a little break, spring break, and I am back, and we will continue to roar for Sushant. So justice for Sushant Singh Rajput, and let's get this done. Let's get a closure
and let's focus on 14th of June, जो बहुत जल्दी आ रहा है, and then the first one is on the next digital protest is on 1st May. So see you guys very soon again. Jai Hind, Jai Bharat. Take care, and good to see you, Amar, after a long time. And yes, everybody who is in Delhi, around Delhi, या जो जा सकते हैं 14 जून के लिए, already ahead of time we are telling you 14 June Jantar Mantar, it's gonna happen. Let's make it the biggest and the loudest roar. Jai Hind, Jai Bharat. Bye bye.